Hey guys, welcome back to my channel Ajus Fashion. In this video I will show you how to make buttonholes. So now let's get started. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और उसके बगल पे एक छोटा सा बेल आइकन होगा, उसे भी प्रेस कर दे ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैंने ये बेबी फ्रॉक ली है जिसमें मैं बटन होल्स बनाऊंगी। मैंने उससे आगे ये सारे बटन स्टिच कर लिए एंड इस बटन की गैपिंग है 3 इंच, वैसे ही बटन होल्स की गैपिंग भी 3 इंच होगी। ऐसे ही 3 इंच करके गैप देते हुए मार्क दे दें। ऐसे फोल्ड करते हुए कट लगा लूँगी। ऐसे ही मैंने जहाँ जहाँ मार्क किया है वहाँ पे कट लगा लूँगी। एंड ऑल्सो कट लगाते वक्त ये ध्यान रखिए ये कट ना ही ज़्यादा बड़ा और ना ही ज़्यादा छोटी होनी चाहिए। बटन्स की साइज के हिसाब से कट लगाना है। ऐसे ही मैं सारे मार्क के ऊपर कट लगा लूँगी। बटन होल स्टिच करने के लिए मैंने ये नीडल और थ्रेड ले लिए। मैं कैसे स्टिच कर रही हूँ ये ध्यान से देखिए तभी समझ आएगी। बैक साइड से ऐसे 2 बार थ्रेड घुमा ले। मैं कैसे स्टिच कर रही हूँ ये ध्यान से देखिए तभी समझ में आएगी। ऐसे ही सेम प्रोसेस आपको भी करना है। सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए मैं ये सेकेंड होल भी स्टिच कर लूँगी।
सो गाइस मैंने सारे बटन होल स्टिच कर लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो स्टिच दिस बटन होल्स विदाउट यूजिंग एनी मशीन। मैं इस पे बटन भी लगा कर दिखा रही हूँ। मैंने ये बटन होल्स बेबी फ्रॉक पे बनाई है, आप लोग शर्ट पे भी बना सकते हैं। So guys, if you like this video, please hit the like button and also share with your friends. Do subscribe if you are watching first time. Thanks for watching.